Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep. I hope you guys can hear me and you can see me as well. Let me know in the chat box everyone, and if you have joined already, please let me know in the chat box. Okay, so welcome once again everyone. In this session we would discuss about vocab building. Some of you keep on asking in the different classes that how should we go about building vocab. We would talk about that exactly in this session. Okay. So I can see a lot of you saying hi in the chat, but there is some trouble in the device that I'm using. So I can see, yeah, I can see Tanu is there, Paritosh is there, Preeti, Ishan, Om. In fact, came. I think he was probably the second person who joined, and I also have more students coming in. Paritosh is there with his tagline. Good evening, guys. Good to see you all. तो जरा एक बार फिर से check कर लूं who else is present. Okay, everyone. So good to see you, everybody. Vocab building is what we are going to discuss today. I am very happy that even now you guys are serious about vocab, because बहुत सारे students by this time, because the CLAT is, let's say, those who are targeting 22, they simply start giving up. For 23, of course, you have more time. This is going to be relevant for 22 and 23 both. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22 23 के लिए valid है. Vocab building is important for even 22. If you're targeting CLAT 22, आपके लिए भी ये session है, और 23 वालों के लिए तो है ही. So there is no denying the fact. Okay. Ishan Singh, we will discuss about that probably in some class, but I think you're doing fine. ऐसा कोई टेंशन ज्यादा मत लो. Okay, Ishan. I mean, we have a lot of time left. We have to analyze how many attempts you are making, what's your accuracy level, what areas you are suffering mostly in, what areas are your weakest area. But I think you're doing fine, Ishan. Okay, so just get on with that. Don't worry too much. Okay. Krishnendu Pandey, good afternoon. Okay, so थोड़ा आगे चलते हैं. Before I move on, let me quickly tell you what we are doing here at BYJU'S for you guys. So first of all, very important, for CLAT 23 students, we have launched a new batch number 7, and the classes are starting from 21st, that is tomorrow. Okay, so if you are thinking about joining CLAT 23 preparation, you know where to go. This is the 7th batch. Clearly shows students are very eager to join and they want to prepare. So in the CLAT 7th batch that we are launching for 23, the features are going to be same. They're all world class, top notch features. For example, you would get live classes on concept building, you would get doubt sessions, mentoring, you would get classes from alumni from NLUs, and of course mocks and whatnot. So you get the entire bouquet. If you have still not thought about it, please come for the uh, free sessions. You can attend them, and that would help you make up your mind better. Okay, we're targeting CLAT 22. We have launched batch 5th. It would be available in bilingual as well as only English medium. तो आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना है, आपका स्वागत है. आपको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है, you can go for only English batch also. It's available in both. Batch 5th, you'll be taught by the best faculty members from across India, and other features, for example, weekly performance tests, classes which would be live, and doubt sessions, one-on-one mentoring, everything is available. So very clearly, if you're thinking about CLAT, you know where to go. Those of you who are joining right now, I'll look at your chat in a second. Okay, just give me a few seconds. So free trial classes are available, guys. You can go ahead and join this batch straight away. Okay. Now, if you are thinking about only English, we have the batch. We are thinking about Hindi, English both, we have the batch for that as well. Okay. So those of you who just joined, Akshit and Paritosh and Ishan, etc. Without time limit, please don't practice mocks, etc. Okay, it won't give you much idea unless you want to really check how many can you solve. Okay, if you're checking just accuracy, but otherwise always use a timer. I want you guys to quickly tell me the answer for this question. बहुत आसान question है. Please attempt and let me know the answer, guys.
Om, you have to use timers, otherwise you won't be able to speed up. Okay, timer use करो, speed बढ़ जाएगी automatically. But keep in mind accuracy level also 75% times. So what is the answer for this question? Please read the question quickly, everybody, and let me know. I hope you guys are working on vocab, or if you're targeting 23, then you have plenty of time. If you're targeting 22, you have relatively less time, but you still can prepare. है ना? Okay, let's see who sends me the correct answer first. So I have got the answer from Ishan already, but correct है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, of course. है ना? चलो, let's start. Ishan is there. Krishnendu has answered. Okay. Paritosh has answered. बहुत बढ़िया. When I say बहुत बढ़िया, I don't mean correct answer. Okay. So hold your horses. अभी देखते हैं. Anybody else? Let's see who can answer. I can see plenty of you. There is no reason why you should not answer. है ना? Arvind का answer is C. Tanishka is B. Very good. When I say very good, don't think I mean correct answer. वैसे भी I have got B. I think there is a printing error here, but I think you would understand this is B option actually. Okay. Okay, no problem. Typing this is a typo. So I have got B, C, D. A किसी ने नहीं बोला अभी तक. That's sad. कोई ना कोई तो बोलेगा. I'm pretty sure है ना. So I'm waiting. Arvind C. Tanishka has retracted her answer. Tanu's answer is C. Now Om's answer is also C. Okay. Let's see. Okay. So very clearly, I was not really going to ask you what is the correct answer, because the options are fairly easy to eliminate, though everybody did not get correct answer. Okay. So first thing first. Now let me talk about something very important in next 30 seconds. I have talked about this earlier also. I will repeat. Whenever you do vocab, please remember guys, whenever you do vocab, I have told you this earlier, if you spend time with words, okay, if you spend time with words, treat the words as if they are strangers and you want to spend some time and make them your friends. Your vocab would expand. 90% students typically treat vocab as something that you should be scared of. Vocab है मुझसे नहीं होता है. Words करता हूँ भूल जाता हूँ. मेरे बस की नहीं है. And then they drop out. After 7 days, 10 days, they simply stop. The question is, if you meet somebody who is a stranger and if you stop meeting the person after 10 days or after meeting twice in 10 days, you don't meet the person ever in your life, do you really think your vocab is going to improve? Do you really think you would remember that stranger for a longer time? नहीं होगा ना. It's as simple as that. What if you spend more time with the stranger and you start asking questions? For example, you ask this stranger, okay, tell me about your family. Where do you come from? Which family do you belong to? You're likely to know more about that person and that person becomes part of your family. क्योंकि आपको उसके बारे में इतना पता चल जाता है. The correct answer in this question is very clearly C for Calcutta. It's not exactly the correct meaning, but it is the most appropriate option. Okay. Now I will quickly tell you what are the other words. Esoteric. Now let me ask others without Googling. Can you guys tell me what does esoteric mean? Anybody? Google mat karna, otherwise the fun is lost, of course. Who can tell me? Vikas, Neeraja, hello, good to see you. Can you guys send me the meaning of the word esoteric? Anybody? You can also say I don't know, so you can type I don't know. वो भी चलेगा, no problem. I'm okay with that. So आप वो भी बोल सकते हो. Okay, so you don't know. Just send me the meaning. Okay. So I'm going to wait for 10-20 seconds. Let me have the meaning. कोई ना कोई तो बता ही देगा. And then we would see if we spend time with words, if we spend time with their origin, etymology, if we know where the words are coming from, we tend to remember them more. हमें ज़्यादा याद रहेंगे वो words, हम ज़्यादा उनको यूज कर पाएंगे और वो हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे. तो ज़्यादा टाइम तक मस्ती कर सकते हैं साथ में, है ना. ओके. तनु को पता नहीं, ईशान को पता नहीं, प्रीति को पता नहीं. चलो कोई बात नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. गुड दैट यू गाइस टोल्ड मी. ओके, नाउ लेट मी हेल्प यू.
with the meanings. And देखना अभी 2 मिनट, just spend 2 minutes with me and आपको ये word हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. Okay, so first of all let me quickly tell you, esoteric basically means something which is understood by few. It's very hard to understand, understood by few. Okay, जैसे आइंस्टीन का स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सुना होगा, वो शायद आइंस्टीन को ही समझ आया होता, उसके अलावा बाकी लोगों के तो बस की नहीं थी, सर के ऊपर से गुजर जाती है ना. देयर आर सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल जो हमें समझ नहीं आते, तो हम कहते हैं यार ये क्या सब्जेक्ट है, बड़ा एसोटेरिक है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहता है. केमिस्ट्री फॉर सम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर सम, प्रोबेबिलिटी फॉर सम कैन बी अ वेरी एसोटेरिक सब्जेक्ट, है ना. अंडरस्टूड बाय वेरी फ्यू, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड टू अंडरस्टैंड. It's pretty puzzling, pretty complex. That's called esoteric. Fledgling तो पता ही होगा. Fledgling basically means a bird, a tiny bird, which is growing its wings. तो वो अपने पंख अभी उसके निकल रहे हैं. So it's a baby bird. It is learning how to fly. इसको अभी उड़ना नहीं आता. So fledgling basically means something that is starting to function, or something which is a fresher, somebody who is a rookie, somebody who is a neophyte, somebody who is just starting. बोलते हैं ना कॉलेज में फ्रेशर है, बच्चा है, बच्चा है. दैट्स व्हाट इज अ फ्लेजलिंग. ओके. एंड डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी हार्श, जो आपके दिल को अच्छा नहीं लगता. देयर आर सिंगर्स जिनके गाने सुन के हमारा दिमाग खराब हो जाता है, यार क्या गा रहा है यार, इतना हार्श है, हमारा दिल दुखी हो जाता है उनको सुन के. मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट आई थिंक यू गाइज नो, है ना. ऐसे बड़े सारे सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज सुन के दिल बैठ जाता है, दुखी हो जाता है, बिकॉज योर ईयर स्टार्ट हर्टिंग. They have discordant voice. कभी कभी हमारा किसी से डिसएग्रीमेंट हो जाता है. We can use this word there also, क्योंकि दिल हमारा एक दूसरे से नहीं जुड़ता. So kind of आपस में झगड़ा sort of हो जाता है. We're not very happy with each other. That's also discordant situation. Okay. तो जरा सा स्पेंड करते हैं टाइम इस पे जल्दी से, and let's see कि क्या मतलब हो सकता है. तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड जो हमारे इस क्वेश्चन में वर्ड्स थे. तो वेरिटेबल वर्ड देखते हैं कहां से आता है. ओके. तो वेरिटेबल बेसिकली कम्स फ्रॉम द लैटिन वेरस, व्हिच बेसिकली मींस ट्रू. करेक्ट. तो अगर वेरस का मतलब ट्रू है, तो वेरिटेबल, आई होप यू गेट द आइडिया, वेरिटेबल का मतलब है समथिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट ट्रू, जेन्युइन, कंसीडर्ड टू बी ट्रू. करेक्ट. तो वेरस इज ट्रू. सो नाउ सी हाउ इजी इट इज टू रिलेट इट विद सम अदर वर्ड्स. फॉर एग्जांपल वर्डिक्ट. Verdict is the true saying by the judge or the jury. Jury कहता है ये final है, ये सच है. That's verdict. Comes from the same root. Or when you verify somebody's statement. When you verify somebody's statement, तो क्या कर रहे हो? आप उसके true nature को निकाल के ला रहे हो. You are basically cross checking whether it is true or not. That's verifying. So if I say that something is unverifiable or something is verifiable, I'm talking about whether we can ascertain the truth or not. वो बात कितना सच्चा है, कितना झूठा है, हम पता लगा सकते हैं कि नहीं, है ना. तो वेरस इज ट्रू, वहां से सारे वर्ड्स आए हैं. यू स्पेंड टाइम विद इट एंड यू सी यू कैन लर्न वर्ड्स सो फास्ट. वेरासिटी बेसिकली मींस ट्रूथफुलनेस. आई रियली डाउट द वेरासिटी ऑफ दिस पुलिस केस मींस आई रियली डाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द पुलिस केस. करेक्ट. फॉर एग्जांपल वी से वेरी, शी इज वेरी स्मार्ट, he is very resourceful. Very means what? Comes from the same root. I'm pretty sure some of you never tried to figure out very का मतलब क्या होता है. Very basically means truly or true, depending on the usage. I'm pretty sure. Let me know in the chat box, everybody. Very word का मतलब कभी सोचा नहीं होगा क्या होता है. Yes or no? I'm inclined to think that. हो सकता है किसी ने पता लगाया हो तुम में से, but usually हम bother नहीं करते. हमें लगता है very का मतलब very होता है, और क्या होता है. But very basically means true or truly. So you are very smart. You are truly smart. You are actually smart. सच्चाई है इस बात में, है ना. Okay. So suppose I say that she is verily a leader. What I mean is she is certainly, truly a leader. Verily. These are new words, but root same है. Now you understand why I keep on saying that whenever possible, spend some time with the word and try to find out the entire family of the word. खानदान का पता लगाओ, कहाँ से belong करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जा रहा है. You would remember the word for a longer time. I can guarantee अगली बार very देखोगे ना,
तुम्हें वेरस याद आएगा कि हाँ यार कुछ तो किया था क्लास में, वेरस, वेरिटास, ट्रुथ। वेरिटास फॉर एग्जांपल मींस ट्रुथ, ट्रुथ। तो आपको थोड़े से ज्यादा वर्ड्स याद रहेंगे, यस और नो? लेट मी नो इन द chat box. So veracious, what is veracious? Veracious is something which is accurate or correct, है ना? So his statements are veracious statements, means his statements are correct or accurate statements. वेरिसिमिलिट्यूड, ये वर्ड देख के लोग भाग जाते हैं, बोलते ये कौन सा वर्ड है यार, ये वर्ड है या मिलीपीड है इतना लंबा, ये तो सेंटीपीड टाइप लग रहा है। वेरिसिमिलिट्यूड बड़ा सिमिलर है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, इट बेसिकली मीन्स वेरी सिमिलर टू। सो वेरिसिमिलिट्यूड बेसिकली मीन्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल। आपको देख के लगता है ये बिल्कुल सच्चा है। फॉर एग्जाम्पल नकली नोट, काउंटरफिट नोट शेयर्स वेरिसिमिलिट्यूड विद अ रियल वन, it's very similar to the real one, very similar to, ऐसे याद रखो। You can do so many new words और ये words आपको हमेशा याद रहेंगे because you know the root। जैसे look at the word esoteric। esoteric का मतलब क्या बताया था मैंने? I told you that esoteric basically means something which is very complicated, complex, not easy to understand. You can call it abstruse, obscure, arcane, or recondite, perplexing, complicated, complex, inscrutable, correct, cryptic or opaque or unfathomable, वगैरह वगैरह, impenetrable, correct? Now where does it come from? It comes from the Greek esoterikos। esoterikos का मतलब होता है inner या inner circle। तो now understand, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते इस वर्ड के साथ। esoteric comes from esoterikos which means inner circle। बहुत पहले, आज से 2000-2500 साल पहले, people would create small groups and they would write secret mantra, you understand, mantra, slok, etc., for each other. They would write magical spells for each other and they would give it to each other। वो मैजिक स्पेल्स होते थे, वो जो श्लोक होते थे, वो जो पोएम्स होते थे, ओनली दोज गाइज कुड अंडरस्टैंड। ये बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज अंडरस्टूड बाय द इनर सर्कल ओनली। So from there you get the word esoteric। esoteric basically means understood by the inner circle। ये सिर्फ अंदर के लोगों को पता है। Now just related with हिंदी meaning, ये अंदर की बात है, ये अंदर के लोगों को पता है, ये बाहर वालों को नहीं पता। Same logic here। If it's understood by very few, it is something which is esoteric। It's complex, abstruse, not understood by others। सिर्फ अंदर के जो अपने बंदे हैं वही समझ पाते हैं ये। तो when I say Einstein's theory of relativity, तो किनको समझ में आता है? जो अपने बंदे हैं, जो आइंस्टीन के आसपास वाले होंगे, उनको समझ आता होगा। बाकी लोग तो देवर लाइक हाँ पोस्टर लगा लो, इनकी फोटो लगा लो, समझ तो कुछ आता नहीं है क्या बोलते हैं, करेक्ट? दैट्स एसोटेरिक। नाउ कैन यू गेस द वर्ड दैट शुड मीन अंडरस्टैंडेबल बाय जनरल पब्लिक? एसोटेरिक तो कुछ ही लोग समझ सकते हैं, तो जो बाकी लोग समझ सकते हैं उसे क्या बोलना चाहिए हमें? अंडरस्टैंडेबल बाय जनरल पब्लिक। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वेरी पॉपुलर टेलीविजन सीरीज, ओके, बिग बॉस। People enjoy it. Why? Because there is nothing to really understand here. No, it's very easy to understand because ऐसा ही पड़ोसी के घर में झांकना, तो सबको मजा आता है देखने में। सलमान भाई फुल ऑन, मतलब सबको मजा आता है। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीबडी। तो एसोटेरिक वाज अंडरस्टूड बाय ओनली फ्यू, इनर सर्कल को समझा होता। तो जब सबको समझ में आए उसे क्या बोलना चाहिए? नाउ इफ यू रिमेंबर, और आई हैव डन दिस अर्लियर आल्सो, एक्स और एक्सो मीन्स आउट और आउटसाइड और आउटर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्सोस्फियर, एक्सोस्केलेटन। जो स्केलेटन आपकी बॉडी के बाहर होता है उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस हैव एक्सोस्केलेटन, उनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, हमारा अंदर होता है। बाहर होता तो बड़ा ऑड लगता, बट अंदर है थैंकफुली। दैट्स कॉल्ड एक्सो। So can you guys now guess what could be the meaning word for the meaning understandable by general public? सबको समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं। Let me see. Let's see who can try and tell me the correct meaning. Tanu, yes, can you try? Om, Preeti, Ishan, everybody, Vikas, Mansi,
ऑल ऑफ यू गाइस, कैन यू ट्राई? बताओ बताओ, आराम से कर सकते हो। एसोटेरिक इज अंडरस्टूड बाय द इनर सर्कल, बाय वेरी फ्यू। तो जो सबको समझ में आए, जनरल पब्लिक को समझ में आए, क्या बोलेंगे उसे? ट्राई ट्राई, आई एम वेटिंग फॉर 10 मोर सेकंड्स। वेरी गुड तनिष्का, क्या बात, यस तनिष्का गॉट इट, एब्सोल्युटली, वेल डन, बहुत बढ़िया। So what would be the word for something that is understood by general public? Exoteric. Exoteric is something understood by everyone. I can guarantee ये वर्ड तुम भूल भी गए ना तो सलमान भाई तो तुम्हें याद दिला ही देंगे। उनकी शक्ल जैसी दिखेगी तुम्हें लगेगा अरे यार ये कुछ तो पढ़ा था, ये एजोटेरिक पता नहीं क्या, एसोटेरिक एक्सो समथिंग लाइक दैट, एंड यू वुड बी एबल टू रिकॉल द वर्ड, यस और नो? गारंटीड और नहीं, है ना, पक्की बात है। तो इन हम मुझसे नहीं तो इनसे तो याद हो ही जाएगा आपको, वर्ड बहुत सिंपल सा है। तो व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग इज एसेंशियली स्पेंड टाइम, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, 20 मिनट्स पर डे भी काफी होता है। 5 वर्ड के भी अभी अगर आप पास्ट में चले जाते हो, इटिमोलॉजी निकाल लेते हो, यू शुड बी फाइन टोटली। हम करते नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं होते ना, तो इस वजह से इफेक्ट नहीं आता, है ना। So I hope you guys would do that. Now look at the word discordant, for example. Dis means no, है ना? Cord is the root word for heart in Latin. तो discordant का मतलब क्या होगा? जो दिल को अच्छा ना लगे, correct? Simple. Tanu, yes, of course, you also did. I saw that later, है ना? So what is discordant? देखा होगा CORD, कॉर्ड, उससे बड़े सारे वर्ड बनते हैं जैसे कॉर्डियल रिलेशनशिप। मैरिजेस में लोग हमें कॉर्डियली इनवाइट करते हैं, दिल से बुलाते हैं, मतलब आप प्लीज आइए हमारे यहाँ पे खाना खाइए, आशीर्वाद दीजिए, और बुराई करते हुए घर जाइए, खाने में नमक कम था, समथिंग लाइक दैट। तो दे एक्चुअली इनवाइट अस फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, कॉर्डियल रिलेशन रखते हैं हमसे, कॉर्डियली इनवाइट करते हैं, है ना। तो डिस्कॉर्ड हो गया मतलब दिल को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो लफड़ा हो गया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंट। तो मीनिंग से याद रखना बहुत आसान है, कॉर्ड का मतलब हार्ड होता है, डिस का मतलब नो, तो दिल नहीं लग रहा, यानी कि नॉट हारमोनियस, नॉट मेलोडियस। दिल को ना अच्छा लगना कैन बी, सुनने में अच्छा नहीं लगता, हार्श, है ना, ट्यूनलेस। जैसे हमारे बड़े सारे सिंगर्स हैं, ऐसे वो माइक लेके गाना गाना शुरू करते हैं, दैट्स वेरी डिसोनेंट वॉइस, ट्यूनलेस, दिमाग खराब हो जाता है, वेरी हार्श, जारिंग नॉइज, है ना। तो ग्रेटिंग नॉइज, ग्रेटिंग नॉइज यू अंडरस्टैंड, जब लोहे पे लोहा ग्रेट करते हो ना, दैट इज ग्रेटिंग नॉइज, दैट्स वेरी हार्श, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैंगलिंग। तो यू कैन लर्न सो मेनी वर्ड्स, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द इटिमोलॉजी, वर्ड्स आते कहाँ से हैं वो देख लो, तो आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो, है ना। ऑल राइट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। So Tanishka, I think you are not one of those people who watches Big Boss. I think it's totally fine, but there are very few only, है ना। Tanishka, that's correct. Okay, everyone. Next question. जल्दी से answer please. This should be very easy. You guys are smart, I think. No problem. Tanu, yes. Very good. All right. D, 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 D. सारे के सारे लोग डी ही बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। याद दिला दूं, एक ऐसे लाइक वाला बटन होता है, उसको प्रेस करने से बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। सो प्लीज वो लाइक वाला बटन एक बार प्रेस करके बताना मुझे, ओके। और सब्सक्राइब का एक बटन होता है, उसको प्रेस करने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बाहर आ जाएगी, तो उसे पहले प्रेस कर दो। एंड बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करना चाहिए,
उससे आपकी जिंदगी में खुशियां बेल के साथ आएंगी. सो आई नो इट वाज बैड जोक, बट प्लीज प्रेस दोज बटन्स क्विकली. ओके, ऑल राइट एवरीवन, लेट्स सी अभी तक कितने करेक्ट आंसर आए. अभी तक सिर्फ एक करेक्ट आंसर आया है. नाउ आई हैव टू करेक्ट आंसर्स. वेल डन गाइस. अरविंद Arvind Kumar, you got it. Well done. Musharraf Ali, you also got it. क्या बात, शाबाश, बहुत बढ़िया. Absolutely. तो करेक्ट आंसर एप्लीकेशन है और कुछ लोग काफी दांत दिखा रहे हैं, बट मैं बता दूं कि आप लोगों ने गलत आंसर देके उसके बाद दांत दिखाया है, तो प्लीज डोंट. ओके, बट अरविंद और मुशर्रफ ने बिल्कुल सही आंसर दिए. बहुत बढ़िया, क्या बात. तनु, तुम्हें तो करेक्ट रूट भी पता है और फिर भी आंसर गलत. क्या बात है. द गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टेरिटी. ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? ऑस्टेरिटी, ऑस्टियर, द अनदर वर्ड इज ऑस्टियर. ऑस्टेरिटी का मतलब होता है जब आप बिल्कुल सिवियर हो जाते हो. दिस वर्ड एक्चुअली इज अ डायरेक्ट वर्ड फ्रॉम ग्रीक. इट बेसिकली मीन्स सिवियर. इट बेसिकली मीन्स आप बहुत सख्त हो जाते हो, अपने आप को किसी भी तरह की लग्जरी अलाउ नहीं करते. ट्रेन में जाते हो तो थर्ड क्लास में बैठ के जाते हो, बस में जा रहे हो छत पे बैठ के जाओगे, सीट पे नहीं बैठोगे. यू लाइक, मैं तो ठंड में बिल्कुल टी शर्ट में घूम रहे हो, नो कोट, नो जैकेट, नथिंग. यू आर सिवियर विद योर सेल्फ. यू आर लाइक एब्सोल्युटली हार्श ऑन योर सेल्फ. दैट्स ऑस्टेरिटी. तो अगर सपोज आप यू कैन अफोर्ड अ BMW और आप ऐसे ई रिक्शा में घूमे जा रहे हो ठंड में, दैट्स ऑस्टेरिटी. करेक्ट. इसको कंजूसी भी बोल सकते हैं लोग, बट आई होप यू गेट द पॉइंट. है ना, मतलब अपने आप से ये लोग काफी सख्त रहते हैं. दैट्स कॉल्ड एब्निगेशन. ओके, एब्निगेशन इज, प्लीज रिमेंबर, नेगा, नेगा बेसिकली मीन्स नो. इसी वर्ड से बना है ना वर्ड नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इज बेसिकली नो. That's why people say no, the answer is negative, the answer is affirmative. Nega basically means no. तो ऑस्टियर पर्सन क्या होता है? वो हर चीज को नो बोलता है. उसको बोलोगे फिल्म चलेगा, नो. पिज्जा खाएगा, नो. मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा पानी के साथ. फुल ऑन ऑस्टेरिटी. दैट्स कॉल्ड एब्निगेशन. निगेशन आई थिंक सीआर में पढ़ा होगा ना. निगेशन इज व्हाट? टू डिनाई, टू से नो, नहीं. बट इफ यू लुक एट द डी ऑप्शन, जो काफी लोगों ने मार्क किया था, यूफेमिज्म. यू, एज तनु राइटली सेड, यू का मतलब होता है गुड. जैसे यूफोनियस वॉइस. यूफोनियस वॉइस क्या होता है? सुरीली आवाज. यूफोनियस, फोन इज साउंड, यू इज गुड. यूफोनियस आवाज, जैसे लता मंगेशकर, उनकी आवाज कितनी यूफोनियस है, इतनी शानदार, इतनी बढ़िया आवाज आती है उनकी, इतना मधुर संगीत. दैट्स कॉल्ड यूफोनियस. तो यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म इज व्हेन यू यूज अ लेस हार्श साउंडिंग वर्ड फॉर अ हार्श वर्ड. जैसे यू सपोज किसी को जॉब से निकाल दिया तुमने, एंड वी यूज द वर्ड ही हैज बीन फायर्ड because somebody has been asked to leave, या somebody has lost the job. ये सुनने में बुरा लगता है, so हम euphemism यूज करते हैं. So for example we say that the company has been restructured in place of saying company has gone bankrupt, क्योंकि bankrupt बड़ा गंदा लगता है सुनने में, अच्छा नहीं लगता है ना. तो सपोज किसी को बोलो तुम फेल हो गए हो, उसकी जगह आप बोलो कि आपको उसी क्लास में आपको टीचर आपका दोबारा स्वागत करना चाहते हैं, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि यार मैं फेल हो गया. सुनने में बुरा लगता है. यूफेमिज्म क्या होगा? यूफेमिज्म वुड बी द टीचर्स आर सो एक्साइटेड टू हैव यू दैट दे वांट टू टीच यू वंस अगेन. दैट्स यूफेमिज्म, है ना. तो इसे यूफेमिज्म बोलते हैं. तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा. स्पेंड सम टाइम. सोफिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है. सोफिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर्स कॉल्ड सोफिस्ट्स. ये लोग क्या करते थे? ये लॉजिकल स्टेटमेंट यूज करके एब्सर्ड चीजों को प्रूव कर देते थे. यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई सोफिस्ट्री इज अ नेगेटिव वर्ड. सोफिस्ट्री नाउअडेज मींस use of logic to prove something that may not be otherwise correct. Lawyers are very famous for sophistry, है ना. Something like nobody is perfect, I am a nobody, therefore I am perfect. Sounds correct logically, but it is basically all jhol jhal. That's called sophistry. Hyperbole, exaggeration.
तो आपको वर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा उसकी हिस्ट्री में जाके देखो, फिर बहुत मजा आने वाला है, फिर आप वर्ड्स बहुत जल्दी लर्न करोगे। करेक्ट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ऑल राइट, तो आगे चलते हैं। जल्दी से बता दो आंसर एवरीवन, ज्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास। हाँ, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, जल्दी जल्दी। तनु बिल्कुल सही, दैट्स करेक्ट। हाइपर इज above the limit, extra, very correct. So some of you guys are doing vocab, I can see that, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। And remember guys, don't be serious with vocab, okay? vocab के साथ जितना fun के साथ मस्ती करोगे ना इसके साथ, तो vocab will become your friend. आप इसको सीरियसली ट्रीट करोगे तो ये बहुत दुखी करने वाला है, ओके? तो थोड़ा मस्ती करो इसके साथ, थोड़े फनी फनी रिलेशंस बनाओ, थोड़े फनी हुक्स क्रिएट करो, रिलेशंस क्रिएट करो which are funny, you would be able to remember words better, है ना? अब सलमान भाई की शक्ल याद आएगी तो तुम्हें एसोटेरिक और एक्सोटेरिक पक्का याद आएगा, गारंटीड। यू हैव टू जस्ट एसोसिएट, है ना? ओके, प्रीति का आंसर आ गया। लेट्स सी प्रीति ने करेक्ट आंसर दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, बट प्रीति ने आंसर दे दिया है। प्रीति का आंसर आया है ए। ओके, लेट्स सी एवरीबॉडी व्हाट इज द करेक्ट आंसर, है ना? अरविंद का आंसर आ गया। अरविंद ने पिछली बार करेक्ट आंसर दिया था, फर्स्ट करेक्ट आंसर। अरविंद का आंसर है सी। ओम का आंसर इज सी, एंड ओम ने 5 बार सी भेजा है, तो मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है, फुल ऑन। ओके प्रीति, आर यू श्योर? तुम देख लो अपना आंसर, तुमने सबसे पहले भेजा था। ओके, ईशान का आंसर है बी, नो प्रॉब्लम। आखिरी क्वेश्चन है एवरीवन, गलती मत करना, मजा नहीं आएगा फिर, है ना? तो दिन थोड़ा सा खराब जाएगा। ओके, बट आई एम गोइंग टू वेट फॉर एवरीबॉडी टू आंसर, तो मैं अभी 20 सेकंड और वेट करने वाला हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तनिष्का आंसर इज बी। ओम ने तो, भाई साहब, ओम ने तो पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री तक भेज दी, जबरदस्त, क्या बात। कृष्णेंदु का आंसर है सी। तनु, व्हाट इज योर आंसर? तुमने आंसर नहीं भेजा, स्माइली भेज दी, ऐसे कैसे चलेगा? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी, हूएवर इज वाचिंग, आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर देयर, है ना? और आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो, फीलिंग तो आ ही जाएगी, सेटिस्फैक्शन आएगा कम से कम कि चलो अब एक आंसर मैंने करेक्ट कर दिया, है ना? ओके, विकास का आंसर है सी। 10 सेकंड और, 10 सेकंड के बाद मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा, ओके? जल्दी से, 10 सेकंड्स ओनली, 10 seconds only everybody. So my sessions happen on Monday, Tuesday, Wednesday, and on app it's from Sunday to Thursday. Okay, तो ऐप पे भी आप आ सकते हैं। 3:30 today we have a session on critical reasoning. तो ऐप पे भी आपका स्वागत है, वहां पे भी आप आ सकते हो, वहां भी मस्ती करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, alright, Jessica's answer is I don't know what exactly Jessica has written. तनुज आंसर इज बी। ऑलराइट एवरीवन, मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग काफी टेंशन में हैं, यार मुझे तो आता नहीं है आंसर इसका, क्या करूं? तो देखते हैं। मेनी बिलीव दैट द करंट स्किज्म इज इररिवर्सिबल। स्किज्म, ओके, ये जो रूट वर्ड है ना इसका, इसके रूट वर्ड का मतलब ही होता है स्प्लिट या गैप, ओके? द रूट वर्ड इज स्किज्म इटसेल्फ, एंड इसका मतलब होता है स्प्लिट या गैप, है कि नहीं? मूवीज, काफी लेट हो गए तुम, वेलकम। तो विकास बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमें बताना है कि स्किज्म का कौन सा ऑप्शन मोस्ट इनअप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट होगा, है ना? तो स्किज्म का मतलब ही होता है स्प्लिट या गैप। रप्चर मीन्स अ ब्रेक, अ गैप, अ स्प्लिट। गल्फ, गल्फ का मतलब क्या होता है? दो लैंड मास के बीच में पानी, दैट्स कॉल्ड अ गल्फ, करेक्ट? Gulf also means a split only. The gulf between the couple has become bigger now, means दोनों में ब्रेक आ गया, स्प्लिट आ गया, आपस में गैप आ गया है। तो रप्चर और गैप तो रिप्लेस कर सकता है। Estrangement, I think you guys know because आप लोग लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो। Estrangement basically means when two parties are not talking to each other, they are not on friendly terms with each other. आपस में दरार आ गई है, आपस में थोड़ा टेंशन हो गया है, आपस में प्यार नहीं रहा, बंटवारा सा हो गया, स्प्लिट सा हो गया है, तो ये भी रिप्लेस कर सकता है।
But what is a shard? Shard is a tukda. It's basically a piece, broken piece or a piece of generally pottery. तो जैसे सपोज आपने चाय के मिट्टी के कप में चाय पी कुल्हड़ में, उसे फेंक दिया, वो टूट गई. That part becomes a shard. It doesn't mean split or gap. It means piece of something broken. So correct answer क्या होगा? In fact, Preeti was the first person. Preeti Kashyap, I think, was the name who gave the first correct answer. The correct answer is shard actually. Well done, Preeti. After that, I think Tanu gave the correct answer. That was, but after some gap. But well done, Tanu, as well. Movies, please take care, movies. You're not well, no problem at all. I'm glad you came. So I hope you guys got the message home. सबको समझ में आया? Spend time with words. When you do that, when you go back and check their origin, आपको बहुत मजा आएगा because आप बहुत सारी चीजें जल्दी से learn कर पाओगे and you will be able to remember them for a longer period of time. Correct? So time spend करना शुरू करो. We have done a lot of classes on this, a lot of free videos on that on YouTube. Please go and watch them also. Vocab building के ऊपर है, तो काफी मजा आएगा. But at the end of the day, remember everybody, you have to start doing it. You are the one who has to take the action. कोई और आपके जगह पे ऐसे नहीं कर सकता. Correct? Thank you so much for joining, everybody. Thank you so much for coming here. And please keep on working hard. I'll see you tomorrow again at 2 o'clock with a new topic on this YouTube channel. Please make sure you subscribe, you like, so that more content can be created and we can reach more number of students across India. All right. Thank you guys. Bye bye everybody. I'll see you again. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you everybody.